The union budget presented on Saturday by Finance Minister Nirmala Sitharaman has sparked a range of reactions from citizens, with many highlighting its impact on different sectors. For entrepreneurs and the working class in Bengaluru, the income tax exemption for up to 12 lakh annual income has been welcomed as a major point of relief. We found it very interesting, and to the normal 80% of India it is very helpful, because about 12 lakhs taxation starts, income tax. So people can save the tax amount and buy things whatever they like, and India will grow through that. So, well, there are a lot of differences in the mind of people, but overall it's a good budget. Yeah, I think overall it's a promising budget, and I think given the dynamics of a vast country like India, the population, the demography, and all that, I think they are doing whatever the government can. So this time, I think the focus is on middle class, and the income tax limit is is raised to 12 lakhs. That is, there's no tax till 12 lakhs. So I think especially the graduates, the freshers who are passing out and getting good jobs, 10 to 12 lakhs for them will be a big relief. In the automotive sector, professionals appreciated the continued support for electric vehicle manufacturing. I've been working in the automotive industry, so one of the key takeaways for me in that sector was that the PLI for electronic components and thrust for EV manufacturing is continuing. The union budget has drawn mixed reactions from across Mumbai, with locals sharing their thoughts on the provisions that directly affect them. For some, the budget has been a step in the right direction, particularly for those belonging to the middle class. बजट में यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बिजनेसमैन हम चाहते हैं इनकम टैक्स में थोड़ी रियायत हो, ताकि लोग अपने बिजनेस को ढंग से बढ़ा सके और हमारी कैपिटल को भी ग्रो कर पाए, और जीडीपी भी अच्छी रहेगी हिंदुस्तान की। और बहुत शानदार बजट को लेकर, व्यापार को लेकर बजट बड़ा शानदार रहा। कल का बजट अच्छा था, आम लोगों के लिए था। जो टैक्स में बड़ी रियायत दी है लोगों को, उससे काफ़ी फायदा होएगा आने वाले भविष्य में। उससे लोगों को खर्चा करने में अपना योगदान बढ़ेगा। और While many welcomed the budget, some traders in Mumbai feel that the GST rates continue to remain a significant burden. बजट बहुत अच्छा था, लेकिन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये जो जीएसटी है हमारा 18%, उसका स्लैब नीचे होना चाहिए था। क्यों ये 12%, हम सोच रहे थे कि 12% या 10% आसपास में करेंगे, ये 18% का बहुत बड़ा होता है। In Patna, Bihar, a local resident gave a thumbs up to the budget. बहुत अच्छा, 10 आउट ऑफ 10। मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। मिडिल क्लास को बहुत दिन से मिडिल क्लास का डिमांड था कि टैक्स में हम लोग को राहत दी जाए, इनकम टैक्स में। वो हम माननीय मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरा किया है, जिससे मिडिल क्लास के हाथ में खर्चा करने के लिए रुपया बढ़ेगा, और उससे वो मार्केट में भी रुपया जाएगा, जिससे इकोनॉमी में बहुत सुधार होगा। Finance Minister Nirmala Sitharaman on Saturday announced significant personal income tax cuts for the middle class and unveiled a blueprint for new reforms as she looked to shore up a slowing economy amid global uncertainties.